Let's think about the amount of charge an object can possess. An object can be positively charged, negatively charged, or have no overall charge. And here we have examples of an object that is positively charged, a neutral object, which has no charge, and a negatively charged object. As well as the type of charge, an object will have an amount of charge that can be measured. The amount of charge possessed by this object can be measured in a similar way that we can measure the mass of an object. Two objects may both have a positive charge, but one may have more positive charge than the other one. So this one on the right has more positive charge than the object on the left. And we can quantify this difference in charge by measuring it. Equally, two objects may both have a negative charge, but one may have a greater negative charge than the other one. So this one on the right may have a greater amount of negative charge than the object on the left. And again, we can quantify this difference by measuring it. The symbol that we use for charge is Q, and the standard unit for charge is the Coulomb C. So this object possesses some charge Q, and we measure it in units of C. If an object is positively charged, its charge takes a positive sign, while if it is negatively charged, its charge takes a negative sign. So the Q for this object would be positive, whereas the Q for this object would be negative. For example, we can quantify the charge on an electron and on a proton. So we know that a proton is positively charged, and the charge on a proton Q is equal to plus 1.6 times 10 to the minus 19 coulombs. An electron is negatively charged, and the magnitude of its charge is the same as that of the proton. So we say that Q is equal to minus 1.6 times 10 to the minus 19 C. Now we're going to discuss how we quantify electric field strength. We know that if a charged object enters an electric field, it's going to experience an electrostatic force. So here we've drawn the electric field lines, and this object with a positive charge is going to enter the electric field and experience an electrostatic force. The force that an object in an electric field experiences at a particular point is proportional to the object's charge. So let's call the force that an object experiences at a particular point F, and this force F is proportional to the charge Q. So we can say that the force is equal to a constant of proportionality, which we're going to call K, times Q. In the same electric field, an object with a greater charge will experience a greater force than an object with a smaller charge. So let's imagine these two objects in the same electric field, but one has a greater charge and one has a lesser charge. And the lesser charge has a smaller force on it, whereas the greater charge has a greater force on it. Different electric fields exert different amounts of force on the same amount of charge. So let's imagine we now have the same charge, but different strengths of electric field. So this is a stronger field, and this is a weaker field. The weaker field will exert less force on the charge, whereas the stronger field will exert a stronger force. We can use this fact to define a quantity called the electric field strength. The electric field strength at a point in an electric field is the force per unit charge on a small positively charged object at that point due to the field. So the electric field strength at a certain point is going to be the force F exerted on a certain charge divided by that charge. We can use this definition to form an equation for electric field strength. This equation is as follows. Electric field strength E. This is your sign to study abroad with the Duolingo English test. Take the Duolingo English test now. Is equal
Yeah, I think we can talk about a few things. That first of all, electric field strength can be described by looking at the diagram as well. For example, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करीब करीब होंगी, वहाँ पे आपको the electric field strength will be stronger in those areas where the lines have distance between them. वहाँ पे the electric fields will be far or less strength उनकी होगी वहाँ पे. For example, the two formulas that we talked about that day last week were election, उसमें electric field strength was equal to force per unit charge, मतलब कि F over Q, और दूसरा था कि voltage over distance. These were the two formulas of electric field strength, F over Q or delta V by D. Equal to force F on a small positive charge, which is measured in newtons, divided by the magnitude of charge, which is measured in coulombs. And therefore we can see that the unit for electric field strength is newtons per coulomb. For example, we can find the electric field strength at a point if we know that a proton with a charge of 1.6 times 10 to the minus 19 coulombs experiences a force of 4 times 10 to the minus 15 newtons at this point due to the electric field. So we know that the charge Q of the proton is equal to 1.6 times 10 to the minus 19 coulombs, and it experiences a force equal to 4 times 10 to the minus 15 newtons. And what we want to find is the electric field strength E. And we know that this is equal to F divided by Q. And therefore we can substitute in the values we were given. So the force is 4 times 10 to the minus 15 newtons, and the charge is 1.6 times 10 to the minus 19 coulombs. And therefore the electric field strength is equal to 25,000 newtons per coulomb. An important thing to note is that when we define electric field strength, we use a small charge. So when we're defining the electric field strength around this large negative charge here, we have to be careful to use a much smaller charge in order to define the strength of the electric field. And the reason for this is to make sure that the charge does not have an effect on the electric field of the larger charge. So the charge will have its own electric field, but because it is so small, its field will be much weaker. And therefore we can ignore its effect on the larger electric field. Now we're going to think about the vector nature of the electric field strength. The electric field strength at a point is defined as the force per unit charge on a small positively charged object at that point in the field. So the electric field E can be defined in terms of the charge Q and the force on that charge F via the following equation. E equals the force divided by the charge. We can rearrange our definition of electric field strength to find the force on a known charge in an electric field of known strength. So rearranging this equation to make force the subject, we get that force F is equal to electric field strength E times charge Q. Since force is a vector quantity and charge is a scalar quantity, electric field strength must also be a vector quantity. So here we have a vector equation with force, which is a vector, being equal to electric field strength times Q. And since we know that charge Q is a scalar, electric field strength must also be a vector. So we know that electric field strength points in the same direction as the force on a positively charged object in the electric field. So here we have our positively charged object, and the force F on it is in the same direction as the electric field strength E. Electric field strength points in the opposite direction to the force on a negatively charged object in the field. So here we can see that we have our negative charge Q, and So I'm writing an essay on cats. Cats in art history. I'm an art history major, and this final... The electric field strength is pointing in this direction, and the force on this negatively charged object is in the opposite direction.
For example, if an electron of charge minus 1.6 times 10 to the minus 19 coulombs experiences a force of 5 times 10 to the minus 16 newtons from left to right, we can find the magnitude and direction of the electric field strength. Know that the force on the electron is equal to 5 times 10 to the minus 16 from left to right, and the charge of the electron is minus 1.6 times 10 to the minus 19 coulombs. So our electric field strength E is equal to this force F times 10 to the minus 16 newtons, and we're going to divide it by the charge, which is minus 1.6 times 10 to the minus 19 coulombs. And so we find that our electric field strength is minus 3,125 newtons per coulomb, or to two significant figures, minus 3.1 times 10 to the 3 newtons per coulomb. The minus sign on our electric field strength simply tells us that the electric field strength points in the opposite direction to our positive force. So because we defined our force to be positive from left to right, therefore the electric field strength points in the opposite direction and is in the negative direction. And you can see that this matches our statement that the electric field strength points in the opposite direction to the electrostatic force on a negative charge. So for a negative charge, the vector for electric field strength points in the opposite direction to the force. Hey guys, I hope you enjoyed the video. जब हमने बात की थी स्ट्रेट लीनियर इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक होती है आपके पास लीनियर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक स्ट्रेट सरफेस के ऊपर एक्ट कर रही होती है। उसके पास आपके पास आती है कि अगर आप अभी इस वक्त अपने घर के फर्श को देखो, स्ट्रेट है तो लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट एक्ट कर रही होंगी। बट व्हेन यू लुक एट अ ग्लोब, एक ग्लोब के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टू बी रेडियल, विच मीन्स कि कुछ एरिया होंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जहाँ पे इट्स गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड देन कंपेयर्ड विद दिस एरिया वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी weak over here. So this is known as the radial electric fields which are on a circular surface. तो यहाँ पे you should know how to define the radial electric fields, draw and interpret the diagram of electric fields, describe the relationship between electric field strength and the electric potential, then use different equations to find the electric field strength between 2 point charges, not on a surface. क्योंकि अभी तक हमने जो ऊपर कवर किया था, यू हैव सीन द टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, और बाकी हमने कुछ डिराइव भी किए थे फ्रॉम द मिलीकान्स ऑयल एक्सपेरिमेंट एज वेल। अभी तक जो दो हैं वो कौन से थे? E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, और दूसरा था E इज इक्वल टू वी बाय डी। अब ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। रिमेंबर वन थिंग, चार्जेस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे जाते हैं, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अ नेगेटिव चार्ज के हमेशा टूवर्ड्स आते हैं। रिमेंबर दिस थिंग फर्स्ट, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वर्सेस अ negative test charge. So in the region around a positively charged sphere or point such as a proton भी एक positively charged है, the electric field will act outwards in all direction away from the center of the sphere, and you will see that the arrows get further apart as you move further away from the sphere. This indicates that the field strength reduces as you move away from the center, and the distance between the equipotentials also increases as you move further away. The field is the means by which the potential changes, so if it is weaker, the potential changes less quickly. A charged particle inside a charged sphere would also experience no resultant force as there is no electric field. The overall effect of all of the charges on the sphere will cancel out within the sphere itself, क्योंकि ये अकेला एक चार्ज है, ये अपने आप के सारे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसल आउट हो जाएगा एज वेल। एंड डिस्टेंस मेजरमेंट्स फॉर यूज इन कैलकुलेशन शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड फ्रॉम द center of the charged sphere. Now, we have also seen that field lines for the radial field become further apart as you go away from the center. मतलब कि as you go away from the center, the electric field lines are becoming further apart from each other, which means that this is weakening the electric field. ये आपके electric field को क्या कर रहा है? ये weaken कर रहा है। तो if you want to find the electric field strength on a point charge, you can use the formula E is equal to Q over 4 pi epsilon naught R square. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पे? 8.85 इंटू 10⁻12, विच यू हैव टू मेमोराइज एज वेल, और ये आपको डेटा बुकलेट के अंदर भी दी होती है। Q इज द चार्ज, 4 पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, एप्सिलॉन नॉट आपको गिवन है यहाँ पे, और R स्क्वायर इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज।
वो डिस्टेंस आर है फ्रॉम अ चार्ज। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो इस चार्ज के सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी आर। इस चार्ज का कोई ना कोई अपना क्यू की वैल्यू भी होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, what is the electric field strength at a distance of 1 angstrom, 1 into 10 power minus 10 meter from a proton? अब प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्लस 1.6 इंटू टेंस टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर? द फर्स्ट एग्जाम्पल। And in the same formula, you can also Yes. incorporate voltage as well. दो फॉर्मूलाज पढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और अगर वी निकालना है तो वी वुड बी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर स्क्वायर नहीं है ये, दिस इज ओनली आर। ओके, बट व्हेन यू आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट वाज आर स्क्वायर। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द फॉर्मूलाज। अब यहाँ पे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम? वही डिस्टेंस दिया हुआ फ्रॉम अ प्रोटॉन। फर्क ये कि अब यहाँ पे आर स्क्वायर के बजाय वी ओनली हैव आर, सो वी कैन फाइंड दी वोल्टेज एज वेल। सो दीज आर द टू मोर फॉर्मूलाज दैट वी हैव स्टडीड। ये जो पूरी चीज़ है जिसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, बजाय कि आप इसको अलग अलग बार बार सॉल्व करो, दैट 1/4 इंटू 3.142 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12, आप उसकी डायरेक्ट पूरी वैल्यू भी याद रख सकते हो, विच इज़ 9 इंटू 10⁻9. Got it? But when you have to show the full working, this is correct. This is how you have to actually show the full working as well. वरना आपके पास आसान अल्फाज में फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। अब आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर के बजाय क्या लिखो? क्यू ओवर आर स्क्वायर, लेकिन के की जगह हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है ये। ठीक है, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है, तो इट इज गोइंग टू बी आर स्क्वायर। और अगर हमने वी का फॉर्मूला लिखना है तो दैट विल बी व्हाट? क्यू ओवर आर स्क्वायर, नहीं सिर्फ आर होगा और बाकी पीछे लिख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दीज आर द two formulas for finding electric field strength and the voltage. Combining electric fields, अब हम अगर हम दो पॉइंट चार्जेस को, राइट नाउ वी हैव जस्ट लुक्ड एट वन चार्ज। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है? सिर्फ एक चार्ज को देख रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट टू चार्जेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, and when there are electric fields caused by more than one charge overall, the overall field at any place then will be the vector sum of all of the contributions from each field. कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से भी होगा, कुछ इसकी तरफ से भी होगा, एंड द फोर्स इफेक्ट्स ऑफ ईच कंट्रीब्यूटिंग फील्ड कंबाइन टू प्रोड्यूस द ओवरऑल फील्ड, and at every point you have to work out the resultant force, and so you know how a charged particle will be affected in that place. The sum of all of these individual force effect is overall electric field. Charge is particularly concentrated in the regions around spikes or points on charged objects. This means that they have a close field lines and the field will be strong around them, and for this reason lightning conductors are also spiked, और वो सारी जो concentration of charge होती है that is more likely to hit all of the conductors as well. ये concentrated होती है, ये देखिए। Now this area is very concentrated, this area is very concentrated, okay, this area is very concentrated, this is a lot of concentrated area for electric fields. In fact, the field around a spiked lightning conductor is often so strong that it can cause a charge leakage through the conductor as well. And this happens before the charge builds up enough to produce a lightning strike. Therefore, the probability of the lightning occurring is reduced, and the further protecting the building from these dangers as well. कूलम्स लॉ क्या कहता है? चार्ज पार्टिकल इंटरेक्शंस की बात करते हैं कि जब आपस में दो चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट करेंगे, पहले हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाली है दैट वाज जस्ट फॉर वन चार्ज, कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी कैलकुलेटेड फॉर अ चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. Then we have also seen how to calculate the potential, q over 4 pi epsilon naught r. These are the two formulas that we have studied till now.
नाउ वी नो कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज अट्रैक्ट, जितने भी अनलाइक चार्जेस होंगे दे अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर. The attraction between a proton and electron can be imagined as proton creating an electric field because of its positive charge, and the electron experiencing a force produced by the proton's field. Note that it could also be thought of the other way around as well, with the proton experiencing a force caused by the electron's electric field. The force between two charged particles q1 and q2, which are separated by a distance r, is described by Coulomb's law. और उसको अब हम इस तरह से measure करेंगे. Now we are going to talk about finding the electric force. हम क्या find करने वाले हैं? Finding the electric force between two charges. तो हम क्या लिखेंगे? q1 multiplied by q2 divided by 4 pi epsilon naught r square. This formula is used to find the force between the two charged particles. एक charged particle is known as q1 and the other charged particle is known as q2. So to find the force between two charged particles, ऊपर वाले आपके पास पुराने हो गए formula, वो क्या थे? When you were talking about a single charged particle in its own electric field. Now you are having two charged particles and you want to find the force, electric force between the two charged particles. This is the formula that you are now going to use. Similarly, we have also seen that E is equal to Q over 4 pi epsilon naught R square. So F is equal to EQ होता है, तो you have simply just multiplied F is equal to EQ, तो आपके पास ये वाला derive हो गया formula. This formula is used how? When you have to find the force between the two charged particles, चाहे वो unlike हैं, like हैं, repel कर रहे हैं, attract कर रहे हैं. जैसे कि explain me this question by using this formula over here. मुझे समझाइए question जल्दी से. Look at all of the values. Tell me if they have put all of the values. कौन सी values उन्होंने डाली हैं formula में? Explain me the whole question. Yes, can you explain me this question, please? The worked example one. जल्दी से explain करें. Open up your mic. The question was, what is the force of attraction between the electron and the proton in the hydrogen atom? हमने force of attraction निकालनी है between the electron and proton in the hydrogen atom. So our charge 1 is what? Plus 1.6 into 10 to the minus 19 proton का charge है, और electron का charge आपको क्या given है? Minus 1.6 into 10 to the power minus 19. तो यू आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला q1 इंटू q2. आपने दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई किए, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. बजाय कि पूरा वो लिखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उन्होंने क्या किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू हमने ऊपर देखी थी ना अलग से, उसको मल्टीप्लाई कर दिए q1 q2 से. मतलब कि दिस फॉर्मूला अबव कैन ऑल्सो बी रिटन एज लाइक दिस. ये जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर. इससे क्या होता है ना कि आपके जो पूरा है ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस गेट्स रिमूव्ड. आपको बस ऊपर एक के मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, एंड यू कैन मेमोराइज द वैल्यू ऑफ दिस के विच इज 8.99 इंटू 10 टू पावर 9. क्लियर हो गया जी? दिस वॉज द वैल्यू. एंड या ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है. All materials are made up of atoms, and the outer part of the atom is believed to be electron orbits. We can therefore imagine the top of any surface to consist of a sheet of negative charges. So the surface of the floor and the bottom of a man's shoe will both be covered with negative charge. और जब आपके पास कोई भी opposite charges induce हो जाते हैं, sorry same charges induce हो जाते हैं, then there is a repulsion. और उस रिपल्शन की वजह से ये जो लेविटेशन वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे हवर बोर्ड्स आए थे, वो जो हवर बोर्ड्स प्रॉपर वाले, वो जो हवा में उड़ते थे लेविटेट वाले, वो भी ऐसे ही काम करते हैं. जब आपके पास दोनों सर्फेसेस चार्ज्ड हो जाती हैं तो दे कॉज लेविटेशन, समथिंग टू फ्लोट एज वेल. और वहां से आपके पास निकल आता है एस्टिमेट द हाइट एट विच द मैन लेविटेट्स. ये आपने अभी नहीं करना है, इसको बाद में देखेंगे. दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. और वो सारा निकाल के देन यू हैड टू कैलकुलेट द फोर्स, और फोर्स का आपके पास अगैन वही फॉर्मूला है.
दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे ना, the shoe electrons repelling the four floor electrons. So you are going to multiply both of the charges of electron divided by 4 pi epsilon naught r. और वो आपके पास नहीं, आपने r निकालना था, force was given to you, you have already calculated the force over here, right? This is your force. तो अब आपने r फाइंड करना था. तो when you rearrange the equation, r is equal to square root of q1 q2 over 4 pi epsilon naught f. ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला बन जाता है rearranging the r. It's the same formula that we have discussed over here as well, but now you have only rearranged the formula for finding the value of r. Similarly, अगर आपको सीधी सीधी वो नहीं दी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड ऑल, यू कैन ऑल्सो फाइंड कंपोनेंट्स एज वेल, बट देयर यू विल हैव टू सी, फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्फीयर 1 एंड दिस इज योर स्फीयर 2. नाउ व्हाट, ये भी रिपेल हो रहा है और ये भी रिपेल हो रहा है. दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन इज पैरेलल टू विच कंपोनेंट? अगर आप देखो ये किस कंपोनेंट के पैरेलल है, तो आप देखो कि ये जो फोर्स ऑफ टेंशन है, फोर्स ऑफ टेंशन का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करता है, फोर्स ऑफ टेंशन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करता है, राइट? अब मैं आपको ये दोबारा समझाता हूँ. लुक एट दिस. वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल जो हैं वो आपस में रिपेल हो रहे हैं, ठीक है? अब हम कैसे निकालेंगे? वी आर नॉट गिवन दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन, बट वी डू नो कि जो फोर्स ऑफ टेंशन आपको नजर आ रही है, इस टेंशन फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ये है ना वो फोर्स ऑफ टेंशन. इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करता है और इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करता है. इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एंगल के सामने, ठीक है? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंगल के सामने, दैट मींस इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी नोन एज टी साइन थीटा, और जो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज नोन एज टी cos थीटा. तो इफ यू वांट टू फाइंड दिस कूलम्स फोर्स, जो कूलम्स लॉ के हिसाब से जो फोर्स लग रही है ऑन द चार्ज पार्टिकल, दैट इज इक्वल टू टी साइन थीटा, बिकॉज टी साइन थीटा एंड दिस इलेक्ट्रिक फोर्स आर बोथ पैरेलल टू ईच अदर, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर. तो हम इसको mg, और जो आपके पास वेट है, वेट वेट आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट, जो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट था ना, अब आप कहोगे वर्टिकल कंपोनेंट तो साइन नहीं होता, हमेशा एंगल के सामने वाला साइन होता है. यहाँ पे जो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था दैट वाज इन फ्रंट ऑफ द एंगल, तो दैट वाज साइन. और जो वेट है mg, दैट इज पैरेलल टू व्हाट? अगर ये डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है तो इट वाज पैरेलल टू t cos थीटा. तो यहाँ से वंस यू हैव कैलकुलेटेड बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स, देन यू कैन ऑल्सो write it in the form of tan as well. आपको पता है ना, sin theta over cos theta is equal to tan theta, और वहां से you can calculate everything as well. If you make force the subject, it becomes mgd over l. वो आप देख लेना डायग्राम से, that what is d equal to, what is l equal to, and then फोर्स की जगह फोर्स इज इक्वल टू q1 q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होता है. फोर्स की जगह हमने mgd ओवर l लिख दी, बट अगैन इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन एंड द डायग्राम दैट यू आर गिवन इन द पेपर एज वेल. बट यहाँ से कुछ रिलेशंस निकल आते हैं, दैट हाउ द रेडियस is inversely proportional to force. Greater the distance means lesser the electric force between the two charges and all, and greater the magnitude of the charges q1 and q2, greater would be the electric force acting on it. And that is the end of your 6A.